तो बताया ये गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने। ठीक है, इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर को गिरफ्तार किया है। आपको वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल PTI के रहनुमा अली जैदी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के दफ्तर पर छापा मारा गया और मुराद सईद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हिरासत में लिया गया और अब ये इत्तलात हैं कि असद उमर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद। जी अब्दुल्ला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर अब से कुछ देर कबल हाई कोर्ट से निकल रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने अपने तहवील में लिया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ अब रियासी इदारों ने क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहाते से उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस अपने साथ ले गई और असद उमर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। हमने वहाँ पे लोगों से बात की कि असद उमर को किस केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहाँ कोई मौसर जवाब नहीं दे सका। उनका कहना था कि जो रियासती अमलाक को नुकसान दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इसके साथ साथ जो शहर में अफरा तफरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और वर्कर्स की जाने से, उसी सिलसिले में जो है असद उमर को गिरफ्तार किया गया। और अभी हमारे जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो वर्कर्स थे जिन्होंने कल क्रैकडाउन किया था, जिन्होंने कल रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाया था और जो रहनुमा थे जिन्होंने तकारीर की थी, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मजीद गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आएगी। जी, गिरफ्तारियों का अमल जारी है। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। इफ्तिखार शिराजी, आपसे जानना चाहेंगे किस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? क्या पहले असद उमर को किसी किस्म का कोई नोटिस भेजा गया था या एकदम से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए, असद उमर साहब के खिलाफ कोई करप्शन केसेस में तो कोई मुकदमा नहीं बने हुए, कोई ऐसा मुकदमा तो उनके खिलाफ नहीं बनाया गया कि जिसमें वो उनको तहकीकात के लिए बुलाया गया हो। लेकिन इस्लामाबाद में कई दफा 144 का जो नफाज था, इस दौरान उन्होंने मुजाहरे किए, जलसे किए, गैदरिंग्स की। इसके अलावा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना कि जिस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की पेशी थी, उस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ा गया और बाकी इस तरह के सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह के कई मुकदमात हैं जिनमें असद उमर साहब को भी नामजद किया गया था रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो मुकदमात बने हैं। तो यकीनी तौर पे जैसे मैंने पहले बताया कि कई मुकदमात में उनको जमानतें मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें अभी तक वो जमानत हासिल नहीं कर पाए थे और ये जाहिर सी बात है गिरफ्तारी उसी जुमले में हुई है। तफसीलात हमें यकीन तो नहीं मिल पाई कि वो कौन सा ऐसा मुकदमा है कि जिनमें उनको जमानत हासिल थी या नहीं थी, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई नया मुकदमा कायम किया गया हो कि नई FIR काटी गई हो और फिर उसके नतीजे में उनको गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन अब तक इतलात ये है कि जिससे पहले मुकदमा थे उनमें से किसी एक मुकदमे में इनको बाकायदा तौर पर इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। अहम खबर है, अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। नैब ने इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू नैब हुकाम की जानिब से पेश कर दिया गया है और नैब हुकाम की जानिब से इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि इमरान खान को अल कादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और नैब की इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। कल गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके बाद
आपको ये बताएं कि पुलिस लाइंस एरिया के अंदर ये जो समाअत का सिलसिला है ये जारी है और इमरान खान को अलकादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। नाब की इमरान खान की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह की गई है। इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस, फैसल चौधरी और दीगर अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। समाअत का आगाज हो चुका है। आपको ये बताएं कि नाब की इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह की गई है। इमरान खान को अलकादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और नाब की इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह भी की गई है। इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस और फैसल चौधरी और दीगर अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पेश कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से यह शिकवा सामने आया था कि पेशी से कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को वकला की टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अलकादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है, जबकि नैब की जानिब से इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी कर दी गई है। इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस, फैसल चौधरी और दीगर अदालत में मौजूद हैं। पुलिस लाइंस को अदालत का दर्जा एक दिन के लिए दिया गया है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अलकादिर करप्शन केस में अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमन से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा, इमरान खान को जो है वो अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। कुछ देर कबल जो इस्लामाबाद के पुलिस लाइन है जिसको अदालत का दर्जा दिया गया, उसमें इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश किया गया है। जो एहतसाब अदालत है मोहम्मद बशीर, उसके सामने इमरान खान को पेश किया गया। इमरान खान के वकला भी मौके पर मौजूद है और अब बाकायदा तौर पर इस समाअत का आगाज जो है वो शुरू हो चुका है। अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो स्कैम है, जिसमें जो एक स्कैम है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और अब समाअत जो है वो शुरू हो चुका है और नेब ने इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। हमारे नेब हुकाम ने अदालत से इस्तदा की है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में इमरान खान की जो 14 रोजा जिस्मानी रिमांड है उसकी अदालत जो है वो इजाजत दे ताकि इमरान खान की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड ले सके। इमरान खान के वकला इस वक्त अदालत में मौजूद है और इस केस की समाअत अब शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर की सरबराही में। जी अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के हेडक्वार्टर के अंदर पेश किया जा चुका है। समाअत का आगाज हो चुका है और याद रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया था और उन्हें रेंजर्स की मदद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया था और आज ही इमरान खान पर तोशाखाना केस में भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी और उन्हें एहतसाब अदालत के जज के सामने पेश किया जाएगा। इमरान खान के वकला ख्वाजा हारिस और फैसल चौधरी और दीगर अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। समाअत का आगाज हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं और बहुत ही अहम केस है जिसकी समाअत इस वक्त जारी है। अलकादिर करप्शन केस है जिसके साथ साथ तोशाखाना केस भी जो है वो आज इसी समाअत के अंदर आगाज होगा उसका। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पेश कर दिया गया है, अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया था और उन्हें रेंजर्स की मदद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया था। और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के मनाजिर भी अब सामने आ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर को गिरफ्तार किया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की जानिब से असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर को गिरफ्तार किया है और ये तीसरी
बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है। आपको बताएं कि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी को गिरफ्तार किया गया और फिर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए उनके दफ्तर पर छापा मारा गया था और उसके बाद मुराद सईद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिरासत में लिया गया और अब यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि असद उमर को पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड की मदद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा असद उमर को हिरासत में लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसकी फुटेज आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से असद उमर को गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ देर कबल जो है वो उमर सरफराज चीमा की भी गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी के दफ्तर पर भी छापा मारा गया और अली जैदी भी कल गिरफ्तारी अमल में लाई जा गई है। जो फुटेज आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये असद उमर की फुटेज सामने आई है जिन्हें अहाताए अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मजीद भी तफसीलात जानेंगे अब्दुल्ला मोमन से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को अब से कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया जब वो अदालत से बाहर निकल रहे थे और असद उमर को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। हमारे जराये के मुताबिक रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तमाम जो लीडरान हैं उनको हिदायत की थी कि वो अपने अपने घरों में ना रहें। हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और इसके अलावा कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन का मंसूबा बना चुकी है, तो इसलिए आप अपने अपने रिहाइशगाह है उससे दूर रहें। लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और असद उमर जो है वो अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लीडरान है और जो कल जो कारकुनान जिन्होंने रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाया था और इसके साथ साथ वो फौजी तनसीबात में अंदर गए थे, उनके खिलाफ भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मजीद गिरफ्तारियां जो है वो न सिर्फ लीडरान की होगी बल्कि इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं जिन्होंने रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाए, फौजी तनसीबात में अंदर गए, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और आज सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां जो है वो इस्लामाबाद से मुतवक्को है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के वाकयात हुए थे, क्या उस हवाले से कोई मुकदमात दर्ज हुए हैं और उनकी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं? जी बिल्कुल, कल जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की गई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहर भर में मुजाहरे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से बताया गया कि पुरअमन मुजाहरे करे, लेकिन हमने इस्लामाबाद में अपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि रियासती सरकारी अमलाक जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की। अब जो है इसके साथ साथ जो जेएचक्यू है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अंदर गए। उस पर हुकूमत जो है वज़ारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो ठीक है अब्दुल्ला मोहम्मद, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एहसान इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आर शोइंग एग्जांपल्स ऑफ वर्स्ट फैशिस्ट रिस्पॉन्सेज दैट वन कैन एवर फाइंड इन हिस्ट्री. This is the worst kind of demagoguery, the worst kind of fascism that is being demonstrated by a leader whose rise to fame was sports. As a sportsman, he ought to be championing sportsman spirit, tolerance, and respecting rule of law. But instead, he has chosen a path of spreading anarchy, chaos, and destruction in the country only to protect himself from accountability. Mr. Imran Khan on number of occasions said that if ever there was a case against him, he will voluntarily present himself before the authorities for investigation. And as you know, that this case in which he has been arrested by NAB is a case of graft, a case of embezzlement, a case of corruption of 160 million pounds, which is 60 billion Pakistani rupees.
160 million pound which was confiscated by UK crime agency on charges of money laundering from a Pakistani real estate tycoon, Mr. Imran Khan, under a fraudulent deal, under a deal of self-benefit, he, instead of depositing that 160 million pounds in national exchequer, he allowed that amount to be deposited in the state bank account to settle the dues of the same person who was fined 160 million rupees. So in fact, 160 million pounds which were confiscated from this person for money laundering in UK, Imran Khan returned that confiscated money back to him so that he could settle his account with Supreme Court. Now this is worst kind of corruption, and he did this to gain personal benefits. Everyone knows that he created a trust with his and his spouse's name as owners and got benefit of huge chunk of land, and there were also audio recordings which talked of some jewelry, gifts of jewelry that Mr. Imran Khan and his wife got from the same person. Now this is not a small case. It is 60 billion rupees of Pakistani taxpayers' money which should have been deposited in the national account. Mr. Imran Khan, through a malified action, allowed that money to be paid back to the same person who was found guilty of money laundering for his own personal benefit. So now my question is, if such a case happens in Western country or any country, whether it is UK or USA, what would the law do? If there is a case where any prime minister or head of the government is found to be indulging in such practice, won't anti-corruption agency or crime agency in that country investigate that case? Won't they proceed to arrest that person if he is not cooperating with the investigation agencies? You saw that before, whenever he was summoned to the court, he would appear in courts at his own leisure. As and when he deemed fit, he will appear before court, and that too only when court would give him a final warning. But before that, he even defied the orders of the courts, and not only did not appear before courts, but he even went to the extent of threatening a lady judge. When security agencies went to his home to serve that summon of appearance before court, there was attack on the security agencies. Petrol bombs were thrown. Dozens of policemen were injured, seriously injured. Stones were thrown. There were firearms. There were terrorists present, known terrorists there. So, and everyone saw those images, how PTI supporters protected his house and they were attacking the law enforcement agencies who had gone to just serve notice from the court. Similarly, what happened in judicial complex in Islamabad is before each one of you. Not only that he attacked the judicial complex, we have a history. Imran Khan had earlier attacked Pakistan television building, the place where we are sitting. In 2014, this place was ransacked. Not only he ransacked Pakistan television compound or offices, he also ransacked Parliament. He attacked the Parliament. Now, will United States forgive those who attacked Capitol or at the behest of President Trump? No. They are all facing charges. And I think it was a big mistake at that time by the government to not arrest him for attacking the Parliament, because Parliament is very sacrosanct. But in order to not
create more hostility, we showed a lot of magnanimity. But Imran Khan misunderstood or took advantage of that gracious approach of the government to maintain political harmony in the country. And he has gone further, and he has not only attacked, yesterday his followers have attacked state properties, security institutions' properties, but he has even gone to the extent of attacking public transport and, worst of all, burning schools. Now, who has been burning schools in Pakistan? It has been the extremists, and now the credit goes to PTI, who have burned schools also in this country. Now, how can any society tolerate this kind of behavior, this kind of lawlessness, this kind of anarchy? So the law has to take its course, and those who have indulged in these kinds of activities will be taken to task. But I want to assure you that there is no political vendetta, there is no political victimization in any of the actions that have been taken by NAB. It is an independent authority. NAB has arrested Mr. Imran Khan under a lawful legal warrant, which has been cleared by the High Court and declared to be legal. Now Imran Khan, who was arresting all the opposition leaders during his term as Prime Minister, I went through a punishment in a death sentence for more than 2 months and was later on cleared by the High Court that it was a baseless case. But we never resorted to such tactics. Mr. Nawaz Sharif was arrested, Mr. Shahbaz Sharif was arrested, all of our frontline leaders were arrested. But did PMLN ever resort to such kind of violence? No. Has People's Party or other parties resorted to such kind of violence? No. I mean, no other party has ever shown this kind of behavior that PTI supporters and Mr. Imran Khan has shown, which clearly shows that he is on a path of creating chaos in the society. He was ousted not through any conspiracy, but for the first time in the history of the country, a Prime Minister was removed through a constitutional process of no confidence. His own allies left him. There was no PTI dissident who voted in no confidence motion. It was just his own allies who left him after his failures, after his poor conduct, and they felt very unhappy with the government and they left him. As simple as that. And majority came on the opposition side. It was a constitutional vote of no confidence, and then he was ousted. Instead of accepting that decision in a sportsman manner, he said it's either my way or highway. Either country will accept me as Prime Minister or I will not allow this country to be run. He went to the extent of trying to sabotage the IMF agreement. He went to the extent of sabotaging countries' relief efforts after the climate disaster that hit us. His party went to the extent of calling international agencies not to help the government in the wake of that climate disaster. So, unfortunately, the behavior that PTI has been demonstrating has been very unethical, undemocratic, and purely fascist. And we are reminded how in history demagogues have caused destruction to their societies. But Pakistan will not be allowed to become hostage to such politics of demagoguery or fascism. We are a democratic country. If Imran Khan feels that he has been unfairly arrested, he can prove his innocence before the court of law, just as we did. I proved my innocence before court of law. All the leaders from opposition, they contested their cases before courts. That is the democratic way. But this is no way that you start inciting people for violence, you cause destruction in the country, you cause loss to the economy, and you try to bring bad image to the country internationally. So I just wanted to clarify this, that Mr. Imran Khan
does not face any political vendetta. He does not face any political victimization. He faces the accountability for his own misdeeds of corruption in which he indulged. And we are witness, because in cabinet secretary testified that this agreement which they presented to UK authorities to transfer the money instead of Government of Pakistan account to Supreme Court account to settle private persons' fine, this agreement was never shown to the cabinet meeting. Cabinet secretary said the meeting had concluded and Mr. Imran Khan just shared an sealed envelope that this is an important agreement and cabinet should approve it. And when some of the cabinet ministers questioned that at least we should be shown, they were snubbed. So this is how, in a very opaque manner, in a very non-transparent manner, he carried out this fraud, embezzlement, graft, and now he's not willing to be held accountable, something which he has been demanding for everyone in this country. But it seems that Mr. Khan believes in accountability of 220 million Pakistanis, but not for himself, not for his party. This is not democracy, this is not rule of law, this is fascism. Thank you. Sir, is your government is considering PTI following yesterday's arsenal tax, number one? Number two, is your government going to take any action against Mr. Malik Riaz, the main beneficiary of this case, and he is said to be close friend of PTI leadership? First of all, the security agencies will present their report, and whatever they recommend, government will act accordingly. But let me say that we cannot have double standards in this country. That for some people, you hold them accountable even if they burn a police post. And for others, even they do much more daring acts, and the state shuts its eyes. This will create implications. This will have implications for Pakistan. So there will be one law. Anyone who takes law into their hand, anyone who acts in a manner which is anti-state, the actions that PTI followers were committing yesterday were not against the government. They were against the people of Pakistan, and they were against the state of Pakistan, because they targeted important state institutions. They targeted important state infrastructure. They targeted schools. This is not acceptable at all. We have fought a great war against terrorists who used to burn our schools, who used to stop our girls from going to schools. And today, PTI is doing the same thing. It is burning schools to deny education to our children. We cannot allow this kind of behavior. And all those who are involved in the case will be investigated by the NAB. You can ask this question to NAB because they are dealing with this case, but I am sure that they will carry out justice, and anyone who is related to this crime will be investigated. So why the security of such important buildings was not ensured by the You see, this was done very spontaneously, and because these normally in 75 years, people have not crossed the red lines. Some of these institutions, for example, during Zia martial law, People's Party went through a lot of persecution, but you don't find that People's Party workers crossed that red line anywhere. During Musharraf martial law, PMLN went through worst persecution, but no one ever crossed that red line, because end of the day, these are our state institutions. If we weaken them, we also strengthen non-state actors who are trying to destabilize Pakistan. So Pakistan needs to preserve its security institutions, respect them. So therefore, it was not really expected that anything like this would happen. And I think PTI yesterday crossed many red lines. So how many people have been arrested yesterday? The provincial, these incidents have taken place in provinces. So provincial government and provincial law and order agencies are taking stock of the situation and also apprehending the culprits. They are trying to recognize them through video images and trying to gather their record. But let me assure you
that we cannot allow such precedents to be repeated. And can you please also add in this that how many people were killed or injured during the violence? Ministry of Interior will, I think, give a statement about that. Any idea about the number of people arrested yesterday? I don't have exact figures because it is in the domain of provincial governments, so we can get numbers from them and share with you. Can you tell us about the security plan for the next coming days? Yeah, government is taking all the necessary security precautions, and as you know that these violence incidents were not outpour of any public demonstration. These were targeted demonstrations planned by Mr. Imran Khan himself, by his own party workers. So these demonstrations or violent actions by no means show that there was any public support for their cause or वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर करप्शन की है तो उसका जवाब देना होगा। खबर दें कि लाहौर में पीटीआई कारकुनों ने शादमान थाने पर धावा बोल दिया है। मुश्तल कारकुनों ने थाने के गेट और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर में पीटीआई के कारकुनों ने शादमान थाने